अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज का जो हमारे साथ टॉपिक है वो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो आए पढ़ते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ को। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की रूह से हम जानते हैं the surface integral of an area is equal to the volume integral of divergence of that theorem by Gauss divergence theorem, stating that the surface integral of an area is equal to the volume integral of divergence of that area। मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी ऑफ वी। सिमिलरली अगर हम इन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शेप में ले ले तो इसका जो शेप होगा वो ई डी ए होगा, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी ऑफ वी। And we know that by integral form से by integral form of Gauss law हम जानते हैं कि we know that EDA is equal to integral of EDA is equal to 1 upon epsilon naught rho dV। Thus divergence of E is equal to E into D of V is equal to 1 upon epsilon naught into rho dV। dV के साथ कैंसल आउट हो गया, हमारे साथ जो टर्म बचता है वो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss law। Respected all, thank you so much for watching this video. Thank you.